These days, the stylists tell you not to oil your hair. I mean, I don't understand. Since ancient time, आप देखो ये कितना साउथ इंडिया में कितना यूज होता है. Yeah. Bengali ladies, they Yeah. have beautiful hair. Yeah. Is there any natural way to grow hair? What do you think about oiling? Is it a myth or oiling does have benefits? So see, as Dr. Ruchi was mentioning, your lifestyle, your diet, obviously is your sleep cycle, your mental status. They are unsung heroes. Yeah. No one talks about that, and that is very important. So that is the basic foundation of your hair and your body. So if you are not keeping that healthy, obviously you can't build a palace on a weak foundation. You can't do that. So coming to the oiling part, so since ancient time, आप देखो ये कितना साउथ इंडिया में कितना यूज होता है. Bengali ladies, they have beautiful hair. Yeah. और खूब ऑयल यूज होता है वहाँ पर. So oil has been somehow I didn't realize this. There is a common feed which goes in the dermatology circles. The oil is enemy. Exactly. Even at parlors these days, the stylists tell you not to oil your hair. I mean, I don't understand. On that note. Yeah. So when I started my private practice, patients used to come and they say कि भाई मेहंदी से तो बाल हो जाते हैं खराब. हाँ. और कलर तो लगाना चाहिए. कलर से तो बाल खराब नहीं होते. तो मैंने सोचा यार मेहंदी इज नेचुरल. और ये कलर तो जो है ये ऑब्वियसली इट्स अ हार्श केमिकल. तो ये फिर एक पेशेंट ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, बहुत लोगों ने बोला. देन मैंने सोचा भाई ये तेरे को बताया किसने? Who told you that? So सर वो पार्लर में है ना, उन्होंने बताया. वो सैलून में है ना, उन्होंने बताया. एंड देन आई रियलाइज, मेरा माथा ठनका. मैंने कहा भाई आप मेहंदी तो लगा लोगे घर में, मेहंदी लगाने कौन जाएगा पार्लर? और कलर लगवाना है तो वो पार्लर, और वो 50 तरीके के आपको कलर के वेरिएशन बता देंगे. और दिस कलर इज द बेस्ट वन, और ये लगवाओ, ये तो इससे अच्छा तो कोई कलर ही नहीं है, और ये तो कमाल कर देगा. तो so all that was oiling is important, definitely. All that was bluff. So ऐसे ही शैम्पूज बिकने शुरू हुए. और बहुत सारे. कहाँ होता था शैम्पू? जब इंसान आदम का बच्चा जब यहाँ पर आया था, कौन सा शैम्पू होता था वहाँ पर उस समय? नहीं होता था. बट सी द थिंग इज people treat oil as their enemy. Oil naturally बालों को प्रोटेक्ट करता है, आपको एक लेयर बनाता है शाफ्ट के ऊपर. It prevents dehydration, it holds back the moisture, it helps your scalp health. The texture of hair उसको sustain करने में help करता है. तो ऑयल एक लेयरिंग भी बनाता है, प्रिवेंट करता है the effect of UV rays and all that, उसको भी कम करता है. Plus naturally our scalp is secreting oils. It has तो आप जब excessive shampoo करते हो, again वही 2 मिनट Maggi noodle instant. So people don't even have time. I see in my patients, even I used to do that at some point of time when I was living in less awareness. आपने क्या किया? आपने बस बहुत सारा शैम्पू डाला सर के ऊपर, फटाफट रगड़ा. ऑयल तो छोड़ना नहीं है, ऑयल को क्लीन करना है, और खत्म बिल्कुल सब, और आप निकल आए. नहीं, it is not the way. Reduce the quantity of shampoo which you are using. I even advise my patients to apply aloe vera plants pulp directly on the scalp after a test patch. It is a very good anti-inflammatory. It has anti-inflammatory property. And it reduces the amount of shampoo which you actually need to do when you are washing your hair. Yes, and reducing the shampoo, retaining some of your natural hair actually helps your hair a lot. Okay. If someone is having acne or a lot of maybe sometimes people have scalp folliculitis, उनके सर में दाने वगैरह आ रहे होते हैं. Those patients are not good, in those conditions. If someone is having psoriasis or something,
in those conditions it is not advisable. not advisable oiling. Yeah. But yes, in most of the cases it is. And believe me, people these days are scared of even touching their hair. उनको लगता है कि मैं तो बस छूऊं ही ना. शैम्पू में भी ऐसा होता है कि बस एक छूमंतर हो जाए और सब साफ हो जाए. Yeah. और दूसरा ऐसा ही उनको लगता है कि ऑयल लगाएंगे तो इतने बाल गिर जाएंगे. Yeah. So if you have loose hair, if you have weak hair, which does not have strength because of maybe nutritional deficiency or some hormonal imbalance, so they are anyway they are going to fall. Correct. You know, पुराने जमाने में कंघियां की जाती थी. रगड़ आपके भी देखा होगा, नानियां दादियां वो कंघी करते थे. So वो क्या था? छोटी बनाते थे. Yes. तो massage is important. You should feel as if it is part of your body. आपको तो पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ पर है भी. Correct. And the area has become senseless for people. I mean, they don't even feel when they touch it. Yeah. And अब हम आपको लकड़ी की कंघी देते हैं और उसको बेच देते हैं बोल के कि देखो ये अच्छा है, इससे ऐसे होता है. अब लकड़ी छोड़ो, अब हम आपको स्टील की कंघी देते हैं, निडल्स, तो सुइयों वाली कंघी. That's called derma roller. So it is actually stimulating blood flow by creating some injury on the scalp, and that is very much important, you know, for the scalp even to realize that it is there. Yeah, true. So बजाय तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना अपने बालों को. And you know, since I'm a healer, and I have been telling this to my patients also, be aware of the emotion which is there in your mind when you are touching your hair. And love should flow from your hands to your hair. And it is mostly, unfortunately, fear. Correct. मैं बाल छूंगा तो गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. Fear or probably hatred for your own body and your own skin and your own hair. Yes, fear. और गंजे होने का सबसे बड़ा रीजन आप जानते हैं क्या है? क्या है? गंजे होने का डर. Oh, okay. So many people lose hair just in the fear of losing hair, and then it starts a vicious cycle, and then it ends up where it ends up.